let Asif Bhamla come in. I think I've understood the point you're making. Asif Bhamla, would you want to respond? Sabse pehle to let's get the elephant out of the room. Actually address the elephant in the room. How can we get the elephant out of the room? Point is, and all leaders have been saying this for the last 3 days, bhai aapne to bade grandly bola tha one nation, one election. Even by the way, I support one nation, one election from the ramparts of the Red Fort. Now you're telling us that you cannot conduct elections of 4 states together. What are we to believe? One nation, one election is a thought, and that was, exhibited earlier. But then for that, again, there is it's not a single party who's in power can take a call on that. You got to take your opposition, you got to take everybody in a consensus on that. So you can't just jump onto that कि आपने ये कहा तो ये करना ही है और ऐसे ही होना चाहिए. ऐसी बात नहीं होती है. एक विचार जब रखा जाता है, again, coming back to Jammu and Kashmir, I already heard a very responsible election. अगर आपने कहा है तो आप ही को करना पड़ेगा ना. सुनिए, I heard ये बात समझ नहीं आई. Let's clarify. No, let me speak. Let me. No, you first answer my question. What do you mean? कहा है तो करना ही पड़ेगा. Of course करना पड़ेगा. No, if you're committing to something, you obviously have to deliver it, ना? Asif, what sort of logic is this? But उसके लिए नहीं. But उसके लिए नहीं. ये लोग Okay. So let me come back to their statement only. उसके लिए सबसे पहले प्रश्न चिन्ह उठाने वाले और सबसे बड़ा विरोध तो उन्हीं का था जो आज इस बात को सहमत कर रहे हैं. तो ये कोई बात नहीं होती है. देखिए, उसके लिए जो प्रयास का एक प्रतिबिंब था, उन्होंने रखा था एक प्रधानमंत्री होने के नाते ही नहीं, पार्टी की तरफ से एक था. लेकिन मेरी बात यहां पर आने पे, आई वाज हियरिंग मिस्टर कुरैशी, ही इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल मैन एंड ही आल्सो मेंशन दैट ऐसा नहीं कि दो इलेक्शन एक साथ होते थे तो कहीं अलग नहीं होता था. हिमाचल गुजरात भी कभी साथ होते थे तो अभी वो अलग हो गए. और फिर 26 नवंबर को आखिरी डेट है. तो अगर यदि एक आध महीने की अवधि ऊपर नीचे हो रही है और जम्मू एंड कश्मीर में अगर आप चुनाव नहीं करते तो आप हम पर उंगलियां लालचन उठाते हो कि अरे वहां पर 370 आने के बाद आप खुद डर रहे चुनाव करने. अब हम चुनाव करने जा रहे, तब आप कह रहे हो कि भाई वहां क्यों चुनाव करो, यहां करो. अरे आपको तो चढ़ भी आपका, पढ़ भी आपका. ऐसे नहीं होता राजनीति में. और यदि चुनाव करना है तो चुनाव होना है. हार जीत, you win some, you lose some. You don't have to. This is the third time the BJP is in power in a proper arrangement in Delhi, and it will come back to power in Maharashtra. And as far as the Latki Behan Yojana and the other yojanas with the government is implementing, that has got jittery, that has made them jittery. So they want to just ensure that this benefit, because they know that यदि वो सरकारें पावर में आएगी, क्योंकि they are under should they be jittery? Or should you be jittery? BJP had proposed with the previous government. No, एक मिनट रुक जाइए आप. ठीक है. Mr. Bhamla, but should they be jittery or should you be jittery? Please remember who the largest party in this in the 2024 elections was. 30 seconds. लोकसभा इलेक्शन में, चलिए एक मिनट. लोकसभा इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी? 30 बताइए कौन सी पार्टी थी लोकसभा इलेक्शन में सबसे? बताइए, आप सवाल का जवाब दीजिए. Which was the biggest party in the लोकसभा इलेक्शन? भारतीय जनता पार्टी, obviously. शिवसेना थी ना उद्धव ठाकरे की, right? I know where you're going from there. So should they be jittery, or should an alliance where alliance partners are calling each other traitors, incompetent, show-offs, मैं मुक्का मार के तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा? Should that alliance be jittery? Just asking you a question. No. What I'm trying to say is that the policies that were implemented by the center were all undone by the previous NVA government. So now the people very well know the development schemes, the infrastructure schemes, the Latki Behan scheme. अगर ये सरकार में आएंगे तो इन सबको रोकेंगे, क्योंकि they have to show one-upmanship. So ये महाराष्ट्र की जनता जो है वो भली बात ही जानती है कि भाई जो केंद्र में राज्य कर रहा है उसी को हम राज्य में भी चुन के लाएंगे. कहीं ना कहीं ऐसी मानसिकता पिछले चुनाव में भी हुई है, क्योंकि they don't want the government. You saw in the 2.5 years of the government how much deadlock was there in the government in the past. So now the people of Maharashtra are not in a position to mistake that, and you will see that in the results to come, and I shall still appear on the day of the results. Mr. If you invite me.